Hi, guys. Today I'll talk about some harsh truths of life which nobody tells you, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़रूरी है कि अगर आपने इनको समझ लिया और अपनी लाइफ में अपना लिया, देन योर लाइफ बिकम्स फॉर गुड। ट्रुथ्स ऑफ लाइफ। लाइफ किसी मैनुअल के साथ नहीं आती, ना ही किसी स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ आती है और ना ही किसी गारंटीड रोड मैप के साथ आती है। लाइफ हमारी शेप होती है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, आवर लेसन्स लर्नड एंड आवर मूवमेंट्स। लाइफ के जितने भी ये ट्रुथ्स हैं, दे आर रियली लाइक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो कि हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं रिगार्डलेस कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी एज क्या है, आपका बिलीफ क्या है, डजेंट मैटर। दे ऑलवेज रिमेन कंसिस्टेंट। इन ट्रुथ्स ऑफ लाइफ को आप लीजिए एज इनविजिबल रूल्स ऑफ द गेम, जो आपको कहीं दिखाई देते नहीं है लिखे हुए, बट दे रियली इम्पैक्ट every single day of your life. For example, uh, you don't need anyone to tell you that time passes quickly, right? You experience it yourself. I mean, काफी बार ऐसा होता है कि सालों बीत जाते हैं और हमें लगता है "अरे यार कुछ महीने पहले की तो बात है।" आपके लाइफ में ऐसा हुआ होगा, राइट? सो अगेन इट्स अ ट्रूथ ऑफ लाइफ विच यू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। ये जितने भी ट्रूथ्स ऑफ लाइफ हैं, इनको इम्पैक्ट और पावरफुल बनाती है इसकी सिंप्लिसिटी। They are not like complex theories or philosophical riddles. They are straightforward insights uh, which hit you differently based on your different stages of life. I mean, अगर कोई टीनेजर, फॉर एग्जाम्पल कोई टीनेजर इन बातों को सुने तो हो सकता है वो उसको थोड़ा हल्के में ले या कैजुअली ले, बट एक एडल्ट सुने बिकॉज ऑफ हिज मैच्योरिटी, they may take it very seriously, these truths of life with weight in it, and it happens. So बहुत सारे ऐसे truths of life हैं. So for example, I was talking about time passes quickly. So similarly, time is very important resource of life. But what we take it so casually, and we think that we have unlimited time in the world. We think that जो भी हमारे सपने हैं हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल ये कर लेते हैं, या we delay our actions. We don't take टाइम इंपॉर्टेंटली एट ऑल। वी थिंक सब कुछ हो जाएगा एक टाइम पे। वाई? अगर आपके कुछ सपने हैं उन्हें आज पूरा करो, अगर आपके कोई टास्क हैं डोंट डिले इट, डू इट टुडे। टाइम इज नॉट लाइक मनी जिसको आप ज्यादा कमा के बहुत ही ज्यादा सेविंग्स इकट्ठा कर सकते हो। टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर। सो डोंट वेट फॉर एनीथिंग। Life doesn't wait for anything. So if you have something in your mind, do it today. Harsh truth of life. Another thing about life, that everything changes. The reality is nothing remains the same forever in life. Circumstances change, even you change over time. What you were 5 years ago you are not today, and what you will be after 5 years from now, again a different person altogether. So why we don't take these things so lightly if something happens in our lives. Change brings new opportunity, fresh perspective in our lives. So again, we should follow this principle. Another truth of life is about failure. There are many, but today I'll just talk maybe a couple of more. It's about the failure. What we think about failure. When failure happens, and which is true, failure gives us pain, disappointment, and we don't feel like doing anything in life when failure hits us. But again, the reality is failure is a part of success. Failure is not opposite of success, it's a part of it, right? जो भी जितने भी लोग आप जानते हो जिन्होंने जिंदगी में कुछ बेहतरीन किया है, उन्हें पता है कि फेलियर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। दे ऑल हैव गॉन थ्रू फेलियर्स इन लाइफ, एंड मे बी देयर इज अ रीजन दे हैव लर्नड through these failures. They have their experiences which they have gained, which made them what they are today. So don't think about failure being a negative thing. It's really important in your life if you understand and accept failure the way it is. Now the last one for today is that happiness comes from within. Somewhere down the line we have heard this sentence, but we never follow this principle, this truth of life. What we do, हमें थोड़ा सा और पैसा मिल जाए हमें खुशियां मिल जाएंगी, हमारा एक जॉब टाइटल एक और इंक्रीज हो जाए हमें खुशी मिल जाएगी, हम कुछ खरीद लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, हम इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं।
But happiness is never about external things. It's all about internal. लेकिन हमें समझ नहीं आता एंड सूनर और लेटर विद एज में भी हमें ये रियलाइज होने लगता है कि हैप्पीनेस इन चीजों को लेकर नहीं, इट्स ऑल अबाउट इंटरनल स्टफ. सो सी हाउ मेनी ट्रूथ्स ऑफ लाइफ आर देयर जो कि अगर हम अपना लें, एक्सेप्ट कर लें द वे दे आर, देन आवर लाइफ रियली बिकम्स फॉर गुड. These life truths are shortcuts to wisdom. They save you from repeating mistakes. ये आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ एंड चेंज योर पर्सपेक्टिव व्हेन लाइफ एंड थिंग्स आर रियली नॉट गोइंग योर वे. ट्रूथ्स ऑफ लाइफ आपको जिंदगी में ये भी बताती है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करना है सो दैट एंड ऑल्सो जस्ट टू मेक यू स्ट्रांग सो दैट वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, I'm talking about some negative instances happening in your life, to take them not so seriously and prepares you to take all the setbacks with ease without any kind of a panic. They also ground you. In a life full of distractions, comparisons, unrealistic expectations, these truth of life bring you back to the reality and tell you, remind you what actually matters. They also tell you, again, remind you that life isn't about perfection. It's about progress, learning, and resilience.